पावर इसलिए डाली हुई कि कई बार अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज करती है, वॉर की सिचुएशन है, तो उसमें केंद्रीय सरकार के पास बहुत जल्दी तेजी से जो है संसाधन जुटा सके, इसकी क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये पावर संविधान में दी गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा हुआ है कि सेस और सरचार्ज केंद्रीय सरकार के पास सीधे जाएंगे। तो जब तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खुद को जो है अमेंड नहीं किया जाए, उसके संशोधन के बिना ये संभव है नहीं। बिहार सरकार ने एक नया क्राइटेरियन दिया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी यूज करें। तो एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर यूज किया जाता है क्राइटेरियन, तो उसका फायदा बिहार को आबादी से भी ज्यादा होता है। तो इसलिए बिहार सरकार ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को करीब 17.5% जो है वजन देने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बात करें कि फिनेंशियल सेक्टर में बिहार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से नए नए उद्योग, नए नए रास्ते खुले, इस पर वित्त विभाग ने 16वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा घोषणा किया है। पहले आइए जानते हैं कि अध्यक्ष के द्वारा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। The Finance Commission does, because often in the news reports confusion about what the Commission does. So I'll do that first, then tell you a little bit about our visit today, and especially the meeting with the government of Bihar this morning. The Finance Commission is a constitutional body, and its main charge is to make a recommendation, make a set of recommendations on how the country's tax revenues will be shared between the union and the states, and then how the share of the states will be divided among the 28 states of the country. So that's a big kind of big picture, big part of what the Commission does. But then the Commission also makes recommendations on certain grants. These grants relate to the local bodies, the panchayats, and the similarly urban local bodies, the municipal bodies. It also makes recommendations on disaster relief funds. Then sometimes it can also make recommendations on some sectoral grants and state-specific grants. So that is the broad kind of picture. The recommendations are for generally a 5-year period, and for our commission, that 5-year period is 2026-27 to 2030-31. I think that's the broad brush picture on what the Commission does. We were appointed in January of the year, but really I joined the Commission about mid-February, and so our work started then. A lot of the work of the Commission involves consultation. Consultation with the states, consultation with ministries of the central government, consultations with local bodies. We also do consultation with the experts in the field. So, we did some 4 or 5 regional consultations. One was actually held here in Rajgir, where experts from 4 or 5 states in this eastern region came around to offer their thoughts on how the Finance Commission should do this devolution of the funds. We have also consulted with previous Finance Commissions. Ours is the 16th Finance Commission, and so there have been 15 others. So we did fairly extensive consultation with the chairman and members of the last 4 Finance Commissions. So that is roughly what we did. Now our state visit started after the parliamentary elections in May. And I think the first visit may have been in early June.
because there was a model code at the time of the election, until the election, so we couldn't start then until the elections had been over. Now we have visited 20 states before coming to Bihar. So Bihar is our 21st state. So we are finally getting there. It has been a long journey for the entire commission. You can do the mathematics on the arithmetics on this. Even if you do one state per week, it'll take roughly 7 months to do it. But you can't do one state a week because there are also other visits that we end up having to do. So, but good progress has been made. We have 7 more to go, after which we will be in a better position to make any decisions. सर मेरा सवाल ये है कि जो डिविजिबल पूल में राज्यों को मिलने वाला शेयर 41% है, जैसा आपने कहा कि 16-17 राज्यों ने इसको बढ़ा के 50% करने की मांग की है, क्या इस पे आप एग्री कर रहे हैं? बिहार सरकार की भी यही मांग है, 50% करेंगे? नहीं, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस बारे में तो निर्णय तो बाद में होगा ना, ये तो बहुत बहुत आगे चल के होता है निर्णय। इस कमीशन की रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 को देनी है, तो ये निर्णय काफी आगे तक होगा। दूसरा सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है, सेस एंड सरचार्ज जो है वो राज्यों को उससे शेयर नहीं मिलता है, क्या ये फाइनेंस कमीशन जो है इस पे कंसीडर करेगी सेस और सरचार्ज राज्यों को? तो ये जो डिमांड है ये बहुत सारे राज्यों ने भी उठाई है सेस और सरचार्ज से रिलेटेड, पर इसमें दुविधा ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा हुआ है कि सेस और सरचार्ज केंद्रीय सरकार के पास सीधे जाएंगे। तो जब तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खुद को जो है अमेंड नहीं किया जाए, उसके संशोधन के बिना ये संभव है नहीं। और जैसा आप जानते होंगे कि ये संशोधन जो संविधान में संशोधन है वो केंद्रीय सरकार को ही करना होता है। राज्य सरकारों की कुछ चीजों में राज्य सरकारों की भी सहमति लेनी होती है, पर पहला कदम तो यही होता है कि केंद्रीय सरकार इसको पार्लियामेंट में लाए और थर्ड मेजोरिटी से पास करे। तो इसलिए मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम है कि केंद्रीय सरकार ये जो पावर्स दी हुई हैं, वैसे इसका एक जो है बेसिस भी है, क्योंकि संविधान में बिना सोचे समझे नहीं डाली है ये पावर। ये पावर इसलिए डाली हुई कि कई बार अगर कैसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज करती है, वॉर की सिचुएशन है, तो उसमें केंद्रीय सरकार के पास बहुत जल्दी तेजी से जो है संसाधन जुटा सके, इसकी क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये पावर्स संविधान में दी गई। सर, आई एम कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर मेरा एक सवाल है कि जो कि बिहार सरकार ने आपके समक्ष रखा है कि आबादी के घनत्व के अनुरूप जो है संसाधन का हस्तांतरण किया जाए, तो उस पर क्या चीज सर? आबादी के अनुरूप जो है सब संसाधन का वितरण हो पूरे देश में। जैसा कि आपने कहा कि बिहार में तीसरी बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो क्या आयोग इस दिशा में भी कुछ नया प्रयोग करना चाहेगी या सोच रही है? नहीं, इसमें क्या आयोग क्या करेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, पर मैंने जैसा आपको बताया कि आबादी जो है हमेशा से जो 5 या 6 क्राइटेरिया जो यूज करते हैं पिछले 15 कमीशन से यूज किए हैं, तो आबादी इसमें हमेशा रहा है एक क्राइटेरिया। पर जैसे 15वें में 10% पूरा स्टेट का जो टोटल स्टेट का शेयर होता है उसका 10% जो है वो आबादी के आधार पर बांटा गया था 15 में। और बिहार सरकार ने जो अभी रिकमेंडेशन दी है उसमें भी उन्होंने 10% ही कहा है, पर वो इसलिए कि बिहार सरकार ने एक नया क्राइटेरियन दिया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी यूज करें। तो एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर यूज किया जाता है क्राइटेरियन, तो उसका फायदा बिहार को आबादी से भी ज्यादा होता है। तो इसलिए बिहार सरकार ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को करीब 7.5% जो है वजन देने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी है। मुकेश बालियो फ्रॉम दैनिक भास्कर। ये एक ये एक सदर्न स्टेट्स का एक पॉपुलर प्रोपेगेंडा रहा
क्या चीज, सॉरी? साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका एक पॉपुलर प्रोपेगेंडा ये रहा है कि हम देते हैं 1 रुपया हमें मिलता है 35 पैसा, या अलग अलग स्टेट्स का जैसे शशि थरूर और डिफरेंट लीडर्स का रहा है, और बिहार देता है कितना और उनको मिलता है बहुत ज्यादा। तो क्या इस वक्त स्ट्रक्चरल चेंज की कोई गुंजाइश है क्या? इसको ये तो जो डिवोल्यूशन ऑफ शेयर जो डिविजन पूल है उसमें क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंज की गुंजाइश है? इसमें ऐसा है कि अभी इस बात का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन आयोग इस समय जो है सभी बातें खुलकर सोचेगा, क्योंकि आयोग के लिए सारे 28 राज्य समान है, तो सभी की बात सुनेगा, फिर जो राष्ट्रीय हित में उचित लगेगा उसी हिसाब से आयोग निर्णय लेगा। फिजिकल परफॉर्मेंस को रखेगा क्या? फिजिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये वैल्यूएशन होगा क्या डिवीजन का? सटल मतलब ये इसमें आयोग इस विषय पे भी विचार तो करेगा ही, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, आयाम है परफॉर्मेंस को समझने का। तो पर कितना होगा या नहीं होगा, ये फाइनल निर्णय इस समय हुआ नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी कहना पहला तो by the state of Bihar on what the Finance Commission should do. So I will tell you a little bit more details on that. So and in terms of the recommendation of the government of Bihar, what they have recommended is that in dividing the union tax revenues. One more thing, very important actually for background, which is that there are certain taxes such as state GST, the tax on liquor, sales tax on petroleum, etc., which the state itself levies and it collects and it has them. It goes back; they all go directly to the state. And there are some taxes which enter directly to the central government. These are not many, but like things like cesses and surcharges that the central government levies, they go directly to the central government's budget or their consolidated fund of India. And similarly, any taxes that are due to the union territories also go directly to the government of India. All other union taxes, income tax, the corporate profit tax, the custom duties, what have you. So all these other union taxes go into this pool. This is called the divisible pool. And what the Finance Commission is dividing is this divisible pool. Okay. So under the 15th Finance Commission, 41% of the divisible pool was awarded to the states, which was then divided according to certain criteria among the 28 states. So on that, the state of Bihar's recommendation is that this share of the states should be increased from 41% to 50%. This has been, in our experience, a relatively common recommendation. The 21 states, probably easily 16 or 17, have said that that share should be increased from 41 to 50%. And then, in terms of the division of the share, division of what is to be allocated, currently meaning 41% of the 15th Finance Commission's divisible pool was allocated to the states. How should that be divided among the 28 states? So conventionally, what has happened is that Finance Commissions have allocated the state share on the basis of certain objective criteria. It's very much kind of formula based. So for instance, I will tell you how the 15th Finance Commission did. So that 41% share, which was that of the states, 15% was divided on the basis of population. Right? So what that means is that, if let's say a state has an 8% share in India's population, then out of that 15%, that state received 8%. So this is divided then in proportion to the population. So similarly, 15th Finance Commission did 15% based on population. Then it did another 12.5% based on demographic performance. That variable they used was the total fertility rate. And so
the lower the total fertility rate, the larger the share awarded to that state. So that was 12.5%. Then one of the very important criteria that most finance commissions have used, especially recently quite a bit, is called the income distance. What income distance formula does is that it is written in such a way that the lower the per capita income of a state relative to the richest large state of India. So currently, for example, Telangana, this is by per capita income. The larger, so Telangana is the among the larger states. Telangana today has the highest per capita income. So the larger the gap between the per capita income of a state and the per capita income of Telangana, for example, the more will be devolved out of this 45% to that state. You met the Chief Minister Nitish Kumar, sir. Was there any discussion on Can you introduce yourself first? Sir, I'm Shyam Sundar Sushovan from Press Trust of India. Now, when you met Nitish Kumar this morning, was there any discussion on this issue as well? So, the demand by the Bihar government for special category status is a part of the memorandum that has been given to us also. This is not something the Finance Commission has any jurisdiction over. And at least at the moment, actually, in the government of India, no state has a special category status. It used to be under the Planning Commission. Planning Commission used to divide the states between special category states and general category states. But that classification went away with the Planning Commission. So at present, it doesn't exist. So while this has been a long-standing demand, even when I was at Niti Aayog, this was an issue. And before I came to Niti Aayog, before that actually also, this was an issue. And it is continuing, meaning it is there in the memorandum that we have received. But as I said, this is not something that the Finance Commission can deliver on. जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका जो कहना था स्पष्ट रूप से ये था कि फिनेंशियल सेक्टर बिहार में एक रेवोल्यूशन लाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ में रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है। कई सेक्टरों पर नए नए आयोजन बनाए जा रहे हैं, नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान दिख रहा है। लगातार जो वित्त आयोग है और बिहार सरकार के बीचों में जो मीटिंग हुई है, वो सारी कुछ बातें आपने सुनी और समझी। जिस तरीके से बिहार को एक नया बिहार बनाने में वित्त आयोग लगा हुआ है, उनका मुकाबला तेलंगाना जैसे बड़े स्टेट से भी है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।